and we choose this part of the graph, T0 and T1. So what will be the formula for the area of this graph? It will be this side multiplied by this side, right? So length multiplied by breadth, right? So length in this case, this one will be equal to A. So A multiplied by T should be equal to, वो तो चलो एरिया हो गया, लेकिन वैसे अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो A इज इक्वल टू V ओवर T ऐसे होता है ना, तो V इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय T, तो ये क्या आना चाहिए? वेलोसिटी. दैट्स वन एक्सप्लेनेशन. द सेकेंड एक्सप्लेनेशन, लाइक शी वाज सेइंग, the unit for A is meter per second squared, the unit for T is second. So if you are multiplying A multiplied by T, it means meter per second squared multiplied by second, this is equal to meter per second. So therefore you get velocity. So yeah, again that's why I was stressing that please pay attention to what's on the y-axis, because if you mistake that, then the rest of the calculation will be wrong. So the area under a graph where you have A on the y-axis and T on the x-axis will give you the velocity. So it's possible that you get a problem in which a graph is given to you and you are asked to calculate the velocity. Okay. The second case that we were talking is about the velocity time graph, like this one for example. In this case, if we take the area under the curve, what will we get? The area under the curve in this case will give you, please, chalo I'll start giving points to students who answer questions, ठीक है? Who answered the first one? You? What's your name? Arisha. So Arisha gets 1 point. Okay, now the second student who will answer this will get 1 point. हाँ बोलो, ऊंचा बोलो. We get position and displacement. Displacement, yes. Can you explain how? Yes. 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 When they cancel out seconds and we left with 1 meter. Okay. Displacement. This is displacement. Also you can see the formula just like we did before. In this case V multiplied by T, V is equal to displacement divided by time, and therefore V multiplied by T is equal to displacement. ये मैं short लिख रही हूँ, actually तो वो होता है final minus initial, है ना? ये भी T1 minus T0 होगा. So it's like delta आप लगाना चाहो properly तो वो इस तरह से होगा. डेल्टा ही होगा ना in every case. यहाँ पे भी you will have delta. डेल्टा का क्या मतलब था? It's a change from one position to the second position. So यहाँ पे for example this will be the acceleration at this point minus the acceleration at this point. It's a change, and the time at this point minus the time at this point. The same for the second case. Okay. So the formula in this case actually is the change. I was just writing it in a short form. Is it clear now? So if you find the area under a curve for a acceleration time graph, you get the velocity. If you find the area under a velocity time graph, you get the displacement. And if you find the area under a position time graph, what do you get? Velocity. समझ आ गई है ना? सेम रूल है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, which is the concept of integration. समझ आ रही है इंटीग्रेशन क्या होता है? Do you understand the word, the term integration? Yes or no? Yes. कौन कह रहा है yes? Good. और अच्छी बात है. Good. और good. और अच्छा, if you don't understand it, I will tell you. Integration basically is a mathematical way of finding the area. इंटीग्रेशन का फिजिकल मतलब देखें तो फॉर्मूला बाद में देखेंगे. द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज एरिया बेसिकली, राइट? अच्छा, तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एन इंटीग्रेशन सिंबल. इंटीग्रेशन इज टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स. अब यहाँ पे कौन से दो पॉइंट्स हैं? T0 एंड T1. So when we are taking the area from T0 to T1, we represent it with an integration sign. इसलिए we have the word integration. If it's a simple problem like a rectangle or a triangle or something like that you will be doing,
So you can just simply solve it like we did it. Okay, you measure the two differences and you multiply them and you get it. But if there is a complex figure which you will not get, in that case we use an integration formula. But I am just introducing the concept to you because it's written over there. Okay. So, and when we talk about integration, there is another thing I would like to tell you. So this, don't be scared of these symbols when you see them. Okay, these symbols represent integration. Okay, and when we talk about integration, usse pehle we talk about differentiation or derivation, right? Okay, differentiation क्या होता है? Differential d over dx हमने पीछे पढ़ा था ना? When we wrote, for example, delta x over delta t, then we applied a limit t tends to 0, then we can write it as dx over dt. This is a mathematical way of writing differentiation. So differentiation और हाँ थैंक यू सो मच, लेकिन ले जाना आप अभी 50 मिनट में, ठीक है? हाँ थैंक यू। ये रास्ते में आता है, वहाँ पे बता दूँ आपको, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो इसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है जस्ट ताकि यू गेट कंफर्टेबल विद दिस। तो यहाँ पे ये दिस इज़ अ पेज, अ वेब पेज। मैंने आई हैव पोस्टेड दिस लिंक ऑन मूडल एज वेल, ठीक है? घबराना नहीं, राइट? इट्स नॉट टू स्केयर यू, इट्स जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट अ लॉट, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा जिक्र आ जाता है, तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए। बिकॉज सिंस वी आर ट्रेन टू थिंक साइंटिफिकली, वी कैन ओनली एक्सेप्ट समथिंग जब हमें उसकी समझ आती है। वी कैन नॉट, वी जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू मेमोराइज इट और समथिंग, राइट? सो उसकी समझ आने के लिए एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है दैट आई फाउंड, विच इज़ मैथ इज़ फन। तो मैंने वैसे आपको लिंक भेज दिया है, सो यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट। लेकिन अगर आप सिर्फ गूगल में जाके लिखें ना डेरिवेशन रूल्स, डेरिवेटिव रूल्स एंड मैथ इज़ फन, तो यू गेट दिस पेज विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें बहुत आसान सा बताया हुआ है, ये थोड़े से रूल्स बताए हुए हैं, तो अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो यू कैन लुक एट दिस, ठीक है? तो डेरिवेशन, द ऑपोजिट ऑफ डेरिवेशन इज इंटीग्रेशन, उसके भी रूल्स होते हैं, इसी तरह से आप उसके भी रूल्स देख सकते हैं। लेकिन अभी यू डोंट हैव टू डू दिस टू मच, थोड़ा थोड़ा बस जस्ट टू गेट यू फेमिलियर, ठीक है? इसके अलावा अनदर थिंग आई फाउंड, like I told you in the beginning of the classes, is the book that you printed it from the top cover page, है ना? वहाँ से शुरू की है ना आपने printing. So if you look at the beginning of this book, you get a few formulas and tables, है ना? वो भी they are very useful for you when you need any of them. वहाँ पे there are a few rules of derivation as well. Again, don't be worried about it. सारा एक वक्त में नहीं करना हमने और सारा करना भी नहीं है. But off and on, these are like tables you can consult whenever you need them. Is that clear? So there's no memorization involved. There's only some understanding involved. Okay, understand and practice first. That's it. Okay, so is this clear now? So we've talked about this. In order, you know, like whenever we study a concept, we apply it to solve a problem, because the best way to understand a concept is to apply it in problem solving. Okay, so let's look at this problem. Okay, the problem 2.9. What's the first step when we want to solve a problem? You read the problem. Please read the problem yourself, then we will read it together. First read it yourself, then we will read it together and we will discuss it together, and then we will start. आप record कर रहे हो? Okay, thank you. So the second boy who answered the question, उसका नाम क्या था? What's your name? Ibrahim. Ibrahim Irfan, right? Good. Okay. So let me start reading it with you. Okay.